Hi students, today we will discuss the third unit, that is the challenges of nation building. In it we study regarding the challenges of casteism, communalism, regionalism, terrorism, then its remedies. First, nation building in India. The most major need of the independent India had to initiate the process of the nation building. Our political leader or the national leader had already takes several steps for the initiation of this process in a systematic way. However, some negative factor makes their tax problematic and in effect. Because of this, even after 7 decades of the independent India, India now try to hard to achieve the objective of nation building. तो इंडिपेंडेंट इंडिया फास्ट काम थिला माने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को बा नेशन बिल्डिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करिबा. तो आम पॉलिटिकल लीडर माने बा नेशनल लीडर माने बहुत माने ट्राई भी करथिले फॉर द इनिशिएशन ऑफ दिस प्रोसेस. However, somehow they are also achieve successful in this way. But some negative factors যেমন ଅଛି casteism, regionalism, religious factor, those are some create some hindrance or hindrance in the way of nation building. ସେଥିପାଇଁ ଆମ 7 decade independent ପାଖାପାଖି 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କାମଟା ବା ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେସ୍ କରୁଛି ସେଭରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ. Next, what is nation building? Nation building is the process of the uniting the people of a state into a well functioning united nation. The process of the building of state power and political institutions, the inculcation of the sense of the inculcation of the brotherhood and sense of unity among the people, and the securing of willing participation of all the people in the process of socio-economic construction, modernization and development. It stands for transformation of anti-alien nationalism into the process of getting the free people engaged for the efforts for developing a new egalitarian society characterized by the highly economic political development. Nation building is a omnibus process, and it includes state building, people bulk democracy building, citizen building, economy building, government building, and social building. It refers to the process whereby the state become a true nation state. Its people become a well-organized, united and cohesive group, and the society become a democratic and developed society. It also involves the making of its political system autonomous, legitimate and capable of both meeting the demands and aspirations of the people. तो नेशन बिल्डिंग कौन? नेशन बिल्डिंग हो गोटे प्रक्रिया जो थे कि गोटे स्टेट लोक मान गोटे राष्ट्र लोक मान गोटे वेल फंक्शनिंग यूनाइटेड नेशन यूनाइट करिया पड़े गोटे माने ठीक ठाक कार्यक्षम युक्त राष्ट्र रे
माने यूनाइट करिया पड़ो क्या गोटे गोटे स्टेट लोक गोटे यूनाइटेड नेशन रे जोटि कि माने समस्त को गोटे स्टेट लोक मानू माने सिंपल वर्ड रे गोटे स्टेट लोक मानू यूनाइटेड करने प्रक्रिया को आम नेशन बिल्डिंग कहूचे। आ कौन बिल्डिंग ऑफ स्टेट पावर को स्टेट क्षमता को आम माने तैयारी करवा बढ़ेबा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी आम तैयारी करवा लोक मान भितर गोटे सेंस ऑफ यूनिटी गोटे स्ट्रॉन्ग यूनिटी क्रिएट करवा आ लोक मानकर इंटरेस्ट को बढ़ेवा दरकार कौन पाई ना आम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट रे समस्ते पार्टिसिपेशन करें भाग नहीं पारे से इच्छा शक्ति लोक मान भितर क्रिएट करवा एटा स्टैंड कर कौन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटी एलियन नेशनलिज्म को गोटे फ्री पीपुल लोक मान जो गोटे एंटी एलियन नेशनलिज्म अच्छी गोटे माने तिक्त गोटे जो अच्छी आम नेशनलिज्म जो कहती माने जो नेगेटिव नेशनलिज्म ताको जमी फ्री पीपुल समस्त फ्री हो पारे माने से को ट्रांसफर करवा होची माने या गोटे मेन एम आ लोक माने एनगेज हवा दरकार लोक मैंने एनगेज हवा दरकार कौन गोटे डेवलपमेंट कौन गोटे एगालिटेरियन सोसाइटी जोटि कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होउथिबो सेमिति माने सेही सोसाइटी रे एनगेज करा दरकार लोक माननकु नेशन बिल्डिंग एमती गोटे प्रोसेस जोटा कि माने जोथरे के बहुत किछि करबा को अछि जोथरे के बहुत किछि माने बहुत किछि फीचर्स अछि नेशन बिल्डिंग रे काम सरे नि केबे जोथरे कोन कोन इंक्लूड थाए स्टेट बिल्डिंग देश राष्ट्र तैयारी करबा पीपल वर्क डेमोक्रेसी माने लोक मान डेमोक्रेटिक तैयारी करबा हमर सिटीजन बिल्डिंग इकोनॉमी बिल्डिंग सोशल बिल्डिंग ये सब इंक्लूड अच्छी आम नेशन बिल्डिंग प्रोसेस रे एटा रिफर करे गोटे प्रोसेस जो कि गोटे स्टेट नेशन स्टेट हो पार ट्रू नेशन स्टेट हो पार माने ए स्टेट लोक माने सब पीपुल सब वेल ऑर्गेनाइज यूनाइटेड कोहेसिव हो पारे सोसाइटीटा डेमोक्रेटिक गणतंत्र और उन्नत धरण सोसाइटी हो पार या भितर आउ कौन इनवॉल्व अच्छी द मेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोनॉमस स्वाधीन होबा दरकार आउ लेजिटिमेस आउ कैपेबल होबा दरकार कौन करिया पई लोक मानक डिमांड और एस्पिरेशन को फुलफिल करिया पई कैपेबल होबा दरकार। नेक्स्ट some challenges of in the way of nation building. First challenges हो the challenges of regionalism. So the challenges of communalism. Communalism continue to be a hard and shared reality in Indian society and politics. Even after the adoption of the secularism and equality of all the people, the communalism continued to affect the political system of India. It constitutes one of the biggest trends in the way of the nation building in India. Disturbing fact is that it has been even the communal riot which is accompanied the dawn of independence and the unfortunate partition greatly shook the people of India. The leader of the Free India tried to face this menace by adoption of the secularism as the fundamental features of Constitution of India. It was designed to secure an emotional integration of the people. Right to religious freedom has guaranteed, and no religion has given the status of state religion. For nearly 15 years of independence, the people of India live in peace characterized by absence of communal rights. But unfortunately, in 1960, the communalism resurfaced in the form of communal riots in the state of UP, Bihar, Odisha, and West Bengal.
Since then, the communal virus has been spreading in almost all the part of the country. तो कम्युनालिज्म बा आमर जो अच्छी सांप्रदायिकतावाद जो सेटा होची गोटे सैड आउ माने गोटे निहाती गोटे जा कह गोटे कठिन आउ सबुठ दुखपूर्ण रियालिटी होची आम देश पई होची कम्युनालिज्म बा सांप्रदायिकवाद जदि बा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे सेकुलरिज्म अच्छी इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल अच्छी तथापि कम्युनालिज्म माने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उपरे तार माने ग्रेट इम्पैक्ट बा तार खराब इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट पके चली आज जाए एटा कम्युनालिज्म होची बा सांप्रदायिकतावाद गोटे गोटे माने बड़ स्ट्रेन बड़ विपद होची आम नेशन बिल्डिंग बा जातीयतावाद पई गोटे बड़ माने स्ट्रेन बड़ विपद जो कम्युनल राइट जो होता सांप्रदायिकवाद जो हिंसा होता इंडिपेंडेंट बेल को जो कि गोटे अनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक घटना घटी इंडिया पाकिस्तान दुईटी देश होता इंडिया पार्टीशन होता माने इंडियन मानक गोटे बहुत माने बहुत कष्ट देता जहाँफल कि इंडियन लीडर माने जो माने सब संविधान प्रणेता से माने सब कौन करथिले ना से इंडियन लीडर माने डिसाइड करथिले फॉर द अडॉप्शन ऑफ सेकुलरिज्म एज द फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म बा धर्मनिरपेक्षता अडॉप्शन करथिले तो इंडिया रे आमे समस्ते फ्रीडम टू रिलीजियन एंजॉय कौचे कौन से धर्म को भी आम ग्रहण कर विदाउट एनी परमिशन ठीक से भली कौन इंडिया कौन गोटे धर्म को ऑफिशियल स्टेटस दि जाएनी इंडिया कौन धर्म इंडिया नेशनल धर्म नुहे या पर भी आमर कम्युनालिज्म प्रकोप आज जाए सरीनी पाखापाखि 15 वर्ष जाए इंडिया इंडिपेंडेंट 15 वर्ष जाए इंडिया रे पाखा कम्युनालिज्म नथिला बा कम्युनल राइट हो नथिला किंतु 1960 बेलू पुणी कम्युनालिज्म आरंभ हो गला इन द नेम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल राइट कोटी यूपी बिहार ओडिशा आउ वेस्ट बेंगल रे स्टार्ट हो गला आ सेबेठू एटा ऑल ओवर इंडिया रे स्प्रेड कर चलेछि कम्युनालिज्म हैज बीन ए रिकरेंट फेनोमेनन इन द इंडियन पॉलिटिक्स between 1967 to 2012 2040 incidents माने whether it is major or minor communal rights has been takes place in Indian society. Communalism involved the exploitation of social plurality of Indian society by the various fundamentalist groups, organization and section for securing their respective narrowly conceived political, religious and sectarian goals. Communalism has been showing its ugly face in several forms like fanaticism, sectarianism, bigotism, fundamentalism, narrow nationalism, religious fundamentalism, dogmatism, linguism, subnationalism and anti-nationalism. Even small incident involving any two community members at time lead to the outbreak of communal riots. कम्युनालिज्म गोटे रिकरेंट फेनोमेन इंडियन पॉलिटिक्स रे बा गोटे गोटे कंटिन्यूअस फेनोमेन 1967 टू 2012 भितर पाखापाखि 2040 कम्युनल राइट बा सांप्रदायिकतावाद कौन कहती स्ट्रगल इंडिया रे हेइथिला. नेक्स्ट द कॉजेस ऑफ कम्युनालिज्म इन इंडिया. Communalism has been a national menace, mental disease and a big social evil. The need is everyone agrees to eliminate this menace.
For finding remedies, it is essential to search the causes behind the growth of communalism in India. 1. Communalism as a bad legacy of British rule. The immediate past of the independent India was the era of communalism encouraged and initiated by the British rule and practiced by some sectarian organization. The introduction of communal electorate in 1909 and the implementation of the device of divide and rule gave fuel to the communalization of Indian politics, and so after some year it starting as the source of outbreak of communal riots. The partition of the country was the direct outcome of this process. The creation of Pakistan as a Muslim state gave rise the idea of India as a Hindu state, although the large number of Muslim and other religious community continue to live in India even after the independence of India. The leader of India will realize the further disintegration of Indian plural society by the impact of communalism and hence decide to initiate the process of nation building through the features of the secularism and the equal right to all. However, many people from the different community will fail to forget the past and try to continue communal riot even if in the present scenario. तो फास्ट हूँ कम्युनालिज्म हूँ ब्रिटिश रूल गोटे माने सबुठ खराब लिगासी बा सबुठ खराब माने जो कौन कहती खराब गोटे चाल जो चलो सबुठ खराब चाल हूँ कम्युनालिज्म तो जिते बड़े इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट माने जिते पास हैला सेते बेलू ही कम्युनालिज्मटा फास्ट स्टार्ट हैला इंडिया रे particularly जो 1909 रे इंट्रोडक्शन हैला हम कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइस एंड रूल डिवाइड एंड रूल जिते माने फास्ट इम्प्लीमेंट हैला ता पई इंट्रोडक्शन हैला कम्युनल इलेक्टोरेट सेटा ही माने गोटे कम्युनलिज्म रो बेसी बेस्ट तैयारी करथिला आ तार फल होची पार्टीशन जो हैला इंडिया पाकिस्तान भितरे 1946 जो पार्टीशन हैला सेटा 7 जो पार्टीशन हैला सेटा होची तार फल आ जो पार्टीशन जेते बेले पाकिस्तान गोटे हैला मुस्लिम स्टेट गोटे माने ऑटोमेटिकली गोटे आइडिया आसी गला जे इंडिया गोटे हिंदू स्टेट जदि बा इंडिया गोटे हिंदू स्टेट नुहे इंडिया रे विभिन्न प्रकार माने कम्युनिटी लोक जेमिति मुस्लिम सिख ख्रिस्टियन समस्त होचंती इंडिया गोटे सेकुलर स्टेट किंतु जो द कोन जेहेतु पाकिस्तान गोटे मुस्लिम स्टेट हे गला तो गोटे आइडिया राइज हैला जे इंडिया गोटे हिंदू स्टेट आउ यही सब को दृष्टि रखी आम इंडियन लीडर माने माने नेशन बिल्डिंग करिया पय चेष्टा करले बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इक्वल राइट टू ऑल एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किंतु या सत्वे भी किछि लोक किछि कम्युनिटी रो से माने भूलिबा को नाराज थे जो कम्युनल राइट बा कम्युनलिज्म से माने भूलिया को नाराज जा फल रे इंडिपेंडेंट रो पाखा पाखी हमर 7 डिकेड गलानी ता परे भी कम्युनल राइट इंडिया रे विभिन्न जगह रे भी देखा जाउछि second causes होची the communalization of history. Several historians have been guilty of playing the negative and dirty role. They have preferred to describe the history of India as the history of Hindu ruler, history of Muslim ruler, history of Maratha ruler, history of Sikh ruler, etc. and etc. Sectarianization of history is the causes of communalism. Even in the time of
writing the history of national movement. Some historians consciously try to describe the role played by the leader of various community. तो कम्युनालिज्म स्प्रेड पाई हिस्ट्री भी बहुत गोटे इम्पोर्टाट रोल अच्छी जमी माने बहुत हिस्टोरियन अच्छे जो मैंने कि जो हिस्ट्री लिखुं से माने मुस्लिम रूलर हिंदू रूलर सिख रूलर मराठा रूलर एमती कही लिखुं जहाँफल गोटे गोटे माने हिस्ट्री भी गोटे कम्युनालिज्म क्रिएट होची सेमती इंडिपेंडेंट जिते नेशनल मूवमेंट भी लिखिले हिस्टोरी मैंने लिखुं से कौ रूलर से कम्युनिटी लोक एत कम कले से कम्युनिटी लोक मैंने स्वाधीन कले ये जो गोटे कम्युनाल डिविजन से माने क्रिएट कर बिटवीन द पीपुल ऑफ इंडिया एटा भी गोटे बड़ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. 3. Communalized leadership. In the process of political socialization and leader recruitment, the communal factors or communalism always playing a key role. Particularly, several minorities groups have always projected and supported those who lead stand fully committed to the respective religious and sectarian interest. These leaders are almost always become leader by pursuing the sectarian interest. The practice of choosing candidate from the communal lines and communalized voting even for the education educated elites to adopt communal posture for getting acceptance and support in poll the failure of leadership to remain away from the communalism has been responsible for keeping alive this evil of communalism. तो आमर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आमर जो रिक्रुटमेंट हो लीडर बाछला बेलू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गुड़ा बहुत इंपोर्टाट रोल क्रिएट करती पर्टिकुलर जो स्मॉल रिलीजियन मान अच्छा स्मॉल कम्युनिटी अच्छा से सब चेष्टा करते से बाछापी जो मैंने सेक्टेरियन इंटरेस्ट फुलफिल करें से लीडर मैंने सब केवल निजर सेक्टेरियन इंटरेस्ट निज इंटरेस्ट ही फुलफिल करती आउ से जो प्रैक्टिस अच्छी जो प्रैक्टिस आम अच्छी कम्युनाल माने कैंडिडेट निज कम्युनाल लाइन रु बाछा एमती कि एजुकेटेड लोक से काम करती सेटा ही मेन कजेस ऑफ माने कौन कम्युनालिज्म इन इंडिया आ यही कारणटा ही कम्युनालिज्म रो माने जो इविल अच्छी ताकू दूर करने अक्षम होची. Then 4. Presence of communal organization. The presence of communal organization, communal religious or linguistic organization are another factors which fuel the communal riots, which from time to time keeps on fire in several countries. जो आम किसी कम्युनाल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे रिलीजियस ग्रुप अच्छा आमर लिंग्विस्टिक ग्रुप अच्छा से माने भी गोटे की रोल प्ले कर फॉर द माने कम्युनालिज्म को से माने ही सब समय कोटि ना कोटि कम्युनालिज्म बा कम्युनाल राइट कंटिन्यू करुचंती. 5. Feeling of alienation in some section of Muslim. After the formation of Pakistan, crores of Muslims are continue to live in India. Their population has increased since 1947. However, some of them are largely failed to join in the national mainstream of India.
and then prefer to remain away from the secular form of Indian politics. Several Muslim leaders of the India feel in the after the independent the secular form of secularism is the best way to live in India. The Muslim fundamentalism is gave the raised the way of the development of fundamentalism in other community which may think difficult for us minority community. They therefore deem it feel to fit and worthwhile to support and strengthen the force of secularism, socialism, economic justice and nationalism, but their ideas are failed to get support to some organization, particularly some Jamaat and madrasas. Such organization uphold fundamentalism. They still prefer to join, support and vote in the communal line. तो पाकिस्तान तैयारी होला परे भी क्रोड्स ऑफ कोटी कोटी मुस्लिम माने इंडिया रे ही रहितले आ 1947 पटू तांको संख्या भी बढ़ी जी किंतु किछि लोक नेशनल मेन स्ट्रीम रे भाग नहीं पार नथिले आ से माने हमर जो सेकुलरिज्म ठा दूर रहि जाई छंती किंतु किछि मुस्लिम लीडर माने रियलाइज करछन जे सेकुलरिज्म होची इंडिया रहिया पे सबटु बड़ भल रास्ता इंडिया रहिया पे सेकुलरिज्म दरकार हेतिपे मुस्लिम कम्युनिटी ही फंडामेंटलिज्म पई वे तयारी करूची और से माने गोटे माइनॉरिटीज रहउचंती तो अन्य माने माने वाइज भाबिले जे सपोर्ट करिया पे सेकुलरिज्म को आउ हमर सोशलिज्म इकोनॉमिक जस्टिस नेशनलिज्म को सपोर्ट करिया पे चेष्टा करले किंतु से माने जहाँ भी माने आइडियाज अच्छे से माने सपोर्ट करती माने मद्रासा जमायत एगुड़ा को सब जाती सपोर्ट ताकर आइडिया को से माने ग्रहण करती और से गुड़ाक हूँ सब फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन जहाँफल रीजनलिज्म क्रिएट होची इंडिया रे 6 religious orthodoxy and fundamentalism. Another factor, writes Mr. D.C. Gupta, which brings communalism in post-independent period was the religious orthodoxy among some Muslim community. Some Muslim organizations remain committed to the obscure and medieval glories of Islam, the supremacy of Islam, the Shariat, and the separate personal law of the Islam. This organization always took the orthodoxy line and refused to accept the new reality of industrial society. In fact, within almost religious community, there is present certain fundamentalist and religious institutions which do not hesitate to use communalism for projecting their views and demands. Every attempt from the government towards restructuring of some orthodox practices is often viewed to be distrust and is invasion against their religion. They are even opposed the progressive reform which relate to their practices and tradition. डॉक्टर डीसी गुप्ता मतरे जोटा कि बड़ फैक्टर जे कि कम्युनालिज्म क्रिएट कौन जो ऑर्थोडॉक्सी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एमंग सम सेक्शन ऑफ द
मुस्लिम मान भितर किसी माने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी अच्छी से माने जो ग्लोरियस हिस्ट्री अच्छी आम मिडिएवल पीरियड ताको से माने भूली पार ना से माने निजको अलग भावुंट और से अलग मुस्लिम लॉ माने अलग नियम सब चाहूँगी इनफैक्ट माने सम काइंड्स ऑफ माने ऑर्थोडॉक्सी सब केवल मुस्लिम नुहे हिंदी मान भितर भी अच्छी सबू धर्म अच्छी जहाँफल कि से माने जदि गवर्नमेंट किसी अटेम्प्ट नौची डेवलपमेंट करने किसी ऑर्थोडॉक्स को बंद करने राजी होना आदि किसी सोशल रिफॉर्म आसूची जोटा कि ट्रेडिशन को रिलेट करुँच भी से करने को दौना तो आज एतिकी आउ जहाँ रहा आम काली डिस्कसन करवा।